Relax. Tilt your head down, open the eyes. Were you all able to do? देखो अभी किया, आंख खोलने की भी इच्छा नहीं करती है। इतना आनंद की अनुभूति। और ये केवल इसलिए नहीं कि आपने ये क्रिया कर ली, आप लंबे समय से जो योग का अभ्यास कर रहे हैं। You're this instrument called human being, this human body, it has got purified. Yoga makes your this body, this gross body, disease free. It takes you on that path, and your mind, man, it get pure. ये शुद्ध होने लगता है, and your जीवात्मा, your कारण शरीर, the जीव, it start getting पवित्र. So शरीर बीमारियों से रहित होने लगता है योग से, मन शुद्ध होने लगता है और आत्मा पवित्र होने लगती है नित्य अभ्यास से। सही योग के पालन से जो हम करते हैं, हम पहले हठ योग से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन आदि करते हैं, प्रत्याहार। इसके अलावा फिर हम जो अष्टांग योग का पालन करते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, कोशिश करते हैं आगे फिर धारणा, ध्यान, समाधि। वो गिफ्ट है, वो अपने आप चीजें आने लगती हैं, उनको पकड़ना नहीं है। यू बिकम एबल, यू गेट इट। वी टेक द हेल्प ऑफ कुंडलिनी योग, क्रिया योग, तंत्र, तंत्र, दिस तन, दिस ह्यूमन बॉडी विद द चक्र activation of chakra, making them purified. And with this all practice of these all around, you do purification techniques in Hatha Yoga also. This body becomes the right candidate to experience that yoga. अभी बताओ, मैं आपसे पूछूं, प्रियांशु कैसा लग रहा है आपको अभी करने के बाद, कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? काफी अच्छा है, मतलब ठीक है, मतलब काम रिलैक्सिंग सब अच्छा है। अभी आप ऑब्जर्व करें, यू फील काम, यू फीलिंग काम, रिलैक्स। यू ऑब्जर्व व्हाट इज योर नेचुरल रिक्वायरमेंट नाउ, व्हाट योर ट्रू सेल्फ वांट टू डू। अब आप क्या करना चाहते हो? इस शुद्धता, पवित्रता जो आपको अभी अनुभव हो रही है, क्या करना चाहते हो? लाइक आई आस्क यू, उमा, हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर प्रैक्टिस? यू जस्ट मेक योर ऑडियो ऑन, टेल मी, ऑडियो ऑन, हाउ डू यू फील? Good. You feel good, calm? Yes. Even you do not want to speak, even I do not want the narrating, speaking after having the experience, you do not want to do, but I have to interact with you. How do you feel? Calmness? I feel Now, good. Yeah, I feel good, and I feel good, and also a bit less. I mean, I feel more calm a bit. yes. And now think about it. What is your natural requirement now? Like someone is hungry, so he needs food to feed, right? You have done yoga, you feel I got the feeding, the food I got, but now new hunger is coming up. What is that requirement? सुनील आप बताओ कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब अलग रिलैक्स होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और मन भी रिलैक्स होता है, मन भी। आत्मा पवित्र होती है। तो अनिर्वचनीय है, हम शब्दों में तो कैसे कहें। अब प्रश्न है कि अब हमारी क्या रिक्वायरमेंट, हमारा हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो क्या चाह रहा है। अनुज आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? Calm, relaxed, peaceful, which is a big word if you feel it in the mind and your soul. And मन कर रहा है कि और इसको करें और बेहतर तरह से, और ऑगमेंटेड, अगर मैं वो वर्ड यूज करता हूँ, और ऑगमेंट करें इसको, जिससे कि आधा घंटा, 1 घंटा, जिससे कि आज का दिन, आज की दिनचर्या और भी बेहतर हो जाए। वेरी गुड। तो अभी तो नेक्स्ट अभी जो रिक्वायरमेंट है अभी, व्हाट इज द राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस स्टेट, व्हाट एग्जैक्टली योर ट्रू सेल्फ इज डिजायरिंग। आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। दत्तात्रेय आप बताओ, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? I feel more grounded. मोर ग्राउंडेड।
More grounded. Yes, and a very, very beautiful term you use. And relax, calm, right? So what is the requirement? Now listen very attentively. Whenever we feel happy, relaxed during your daytime for worldly things, right? So what becomes your requirement? You want sukh, like sukh. That means you want to enjoy the happiness which come through sense organs via mind, मन. लेकिन अभी जो आपकी इच्छा है, right now what are you desiring? First of all, what are you is not mind as of now. Your mind is not requiring something. You are with your true self connected. Durga, now you became from Kali to Durga. Disciplined power. Kali is little bit volatile power, and Durga is disciplined power, Shakti. So being a Durga or being a Radha, you actually want now as a Radha Maharas. You want something which is divine in nature. So अभी जो आपका उत्पन्न हुआ है, that is called आपके अंदर रस और भाव. That is the secret. I'm telling you, out of the good practice of yoga, the bhav and ras get ignited in you, within you. और उसको प्रकट करने के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग, और ये जो प्रकट होता है ये क्या है? आपको सरेंडर करना है. किसको? शिवा को, एज ए राधा कृष्णा को. सो यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू आर एंटरिंग इनटू द महारास, एंड द एक्सप्रेशन इज थ्रू भक्ति. और उस भक्ति का एक्सप्रेस करने का what is the best method? So before I tell you first of all, best wishes of International Day of Yoga and World Music Day also for all of you. It is World Music Day also. I'm coming. What is the connect between these two things? Expressing your bhav and ras, your emotions and this pure love. If I convert in English, but otherwise bhav and ras. Converting in English, I do not find the right word. The only ras and bhav can express itself in a true sense. For Uma, I'll try to explain on some other time what is the ras and bhav. It is such a divine, these are divine words which only can be experienced. These are Sanskrit word, bhav and ras. You can express these two things with singing. You can sing only. And this singing will not come like the normal people are singing anything. You want to sing for your Shiva, for Krishna, as a Radha to Krishna, as a Durga to your Shiva. I learned the music. I learned this vocal music for a long time. I'm learning it. I have seen the different form of the singing, but then I found there is a Vedic Sangeet. We can call Samdev Sangeet, the root of all the Sangeet, the singing. Today we know it as a Dhruvapad. Dattatreya know it. Dhruvapad. Dhruv Tara, which is at its place. It does not get diverted with the. It does not get fluctuate. It is established at its place. It is rooted, grounded, like Dattatreya said. Anu says like it augment. It actually augment this bhav and ras process, right, Anuj? That is very much disciplined, and it talks about only connecting with the God. It is not the normal that music, the singing. And this singing, to express the bhav and ras, we have to do bhakti. For bhakti, I narrate one shloka to you. One shloka. It was told by my Drupad Guru, Dr. Madhu Bhatt Telangaji. She's my guru for Drupad. I'm learning from her. She has the legacy of this Vedic Sangeet, Drupad Sangeet for 4-5 generations, for 400-500 years of Drupad. And it has been for praising the Lord Krishna. It's called Pushti Margya Sangeet also for Lord Krishna.
I used to have many of time the singing that is also having. I ask you to all to sing with me, and you enjoy that bhakti sangeet at the end of the session we have been doing. That is the part of that legacy only you have been enjoying. So there is shlok. I tell you the meaning also. Puja koti gunam stotram. स्तोत्रात् कोटि गुणम जपः जपात कोटि गुणम गानम गानात परतरम नाही. She told this shloka to us. इसका अर्थ क्या है? We want to express the bhakti to Shiva, right? As a Durga. So puja koti gunam stotram. If you want to do puja, the billion time better than puja is stotram. Stotram means गुणगान करना आपके आराध्य का, praising that God, praising that Shiva, or as a Radha to Krishna. Then he says स्तोत्रात कोटि गुणम जपा. स्तोत्र स्तोत्र गान से भी करोड़ों गुना, मोर देन बिलियन टाइम इज जपा, डू जप. जपात कोटि गुणम गानम, जप से भी बिलियंस टाइम इज गानम, गाना, गायन. गानात पर तरम नहीं, गाने से बड़ा कुछ भी नहीं है. सो इफ यू वांट टू एक्सप्रेस दोस भाव एंड रस यू हैव, if you want to express, so singing is the best way. So the state you get after doing yoga, if you do sing something for your Shiva or to Krishna, is the best. So today, okay, we will sing one phrase. We all are raw, right? But we'll try to sing one line. The line is, it is also Drupad. Jayati Jaya Durage Devi, Jayati Jaya Durage Devi. Jayati Jaya. Jai ho, the victory. किसकी? दुर्गे देवी. दुर्गे, because the disciplined power we have, उस देवी की विजय हो. Because we, if that is getting the victory, we won, we will win. तो उसी का, और उसका पर्पस क्या होगा, उसका जीतने का मतलब क्या है? If she is winning means she is connected with the Shiva. That is what we want. So we'll do one thing. First I'll sing the one line, then I'll ask one by one, you will also do with me, right? So okay, starting with प्रियांशु, आप करिए पहले, है ना, वन बाय वन, वी ऑल विल डू दिस लाइन, है ना. तो जब मैं बोलूं नाम प्रियांशु, तो प्रियांशु आप वो अपना ऑडियो ऑन कर लेना, right? Other will also sing, but they are singing, but we are not able to sing. So because otherwise multiple voices will not make any the clear voice. First I'll sing, then that particular participant, then again I'll sing for next. प्रियांशु आप अपना ऑडियो ऑन कर लो. ओके, पहले 2 बार मैं गाऊंगा, 2 बार आप गाओगे. जायाति जाया दुर्गे देवी, जायाति जाया दुर्गे देवी. जयति जय दुर्गे देवी. गुड ट्राई, गुड ट्राई. जयति जय दुर्गे देवी. एक बार और गाता हूं मैं, फिर गाना. जायाति जाया दुर्गे देवी, जायाति जाया दुर्गे देवी. जयति जय दुर्गे देवी. गुड, वेरी गुड ट्राई. अब आप गाइए सुनील, ठीक है? पहले मैं गाऊंगा, फिर आप, और उस भाव में भी आओ. हम किसकी जय कहना चाह रहे हैं? उस दुर्गे देवी. कौन है वो दुर्गा? मैं ही तो हूँ. क्यों जीत हो रही है? मैं शिव से मिल चुकी हूँ, मिल रही हूँ, उससे मिली हुई हूँ, ऑगमेंट फील कर रही हूँ, ग्राउंडेड फील कर रही हूँ. जायाति जाया दुर्गे देवी,
जयति जय दुर्गे देवी, और गाओ एक बार। जयति जय दुर्गे देवी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ अनुज, पहले मैं गाता हूँ फिर आप। जयति जय दुर्गे देवी, जयति जय दुर्गे देवी। फिर गाता हूँ, फिर रिपीट करना आप। जयति जय दुर्गे देवी, जयति जय दुर्गे देवी। बहुत बढ़िया। नाउ उमा, so I'll sing one line, then you, then again sing, I'll sing, then you sing. जयति जय दुर्गे देवी, Jaya Jaya Durga Devi. वेरी गुड। जयति जय दुर्गे देवी, Jaya Jaya Durga Devi. गुड। नाउ दत्तात्रेय, उमा, you make your device in mute mode. जयति जय दुर्गे देवी, जयति जय दुर्गे देवी, जयति जय दुर्गे देवी, जयति जय दुर्गे देवी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। So when we'll do practice, I make one announcement today, because all of you have been practicing yoga for a long time, and I have been trying to involve this expressing ras and bhav through the bhakti sangeet. Many of times I have been doing. I'll try to make it in more disciplined manner, in more regularly, right? Because many of you have asked me, sir, I'm missing that. आप वो क्या करो, आप जो भी एक दो लाइन भले 2 मिनट के लिए करते हैं, मेरा दिन में मैं वो वही गुनगुनाता रहता हूँ, बैक ऑफ द माइंड इट कंटिन्यूज, एंड दैट मेक माई डे. So I've got those feedback from all of you. So that is what actually your hunger after getting that bhav and ras of yoga practice, that is your requirement. So I'll try to make it regularly. ये जो संगीत है, तो I'll call this वैदिक और सामवेदीय संगीत, ध्रुपद संगीत, I call it yogic संगीत, yogic संगीत. Being a yogacharya, my interest enter into that, I think because of the blessings of the God, it wanted me to enter into this purest form of the singing, to express the bhakti. So I call it yogic sangeet, called Drupad. And I tell you very interesting fact. Today is the World Music Day. Today it is International Day of Yoga also. And what do we call? Geographically, with science we call it. It is a summer solstice. We say summer solstice. आज से दिन छोटे होने शुरू होते हैं, है ना? आज से दिन छोटे होने शुरू होते हैं. And what is the day of winter solstice? आपको मालूम है विंटर सोलिस्टाइस कब होता है? अनुज बताओ आप. जहां से दिन बड़े होने शुरू होते हैं वो कब होता है? कौन सा दिन होता है? दिसंबर 21-22 के अराउंड कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मेरे को. ऐसा कहते हैं 21 से 25 के बीच में कोई भी दिन पड़ता है, उस समय के आसपास होता है, राइट? इट इज, यहाँ वर्ल्ड म्यूजिक डे बोला गया. म्यूजिक हैज एवरीथिंग, ऑल द फॉर्म्स ऑफ काइंड ऑफ म्यूजिक इज देयर. ऑन 25th day, 25th of December, it is the birthday of our guru, dada guru we can call, my guru's father, Padma Shri Pandit Lakshman Bhatt Telangi ji. It is birthday of my guru dada. This, for this Drupad yogic sangeet, I'm learning. I'm the student of, you can call, just in nursery class. I'm learning because it is a very big thing. I'm in nursery.
If my guru says yes, you are in nursery, then I'll say I'm nursery. Otherwise, I'll say I'm in prep only. I'm in prep only. I'm trying to say their name. That itself is an honor for me if I'm able to say these are my guru. So I feel with my heart that is winter solstice, 25th December, the birthday of my Dada Guru. It should be celebrated as World Yogic Sangeet Day. World Yogic Sangeet Day. That's called Dhruva. And the God has made the such beautiful things. Some winter, summer solstice, winter solstice. Maybe the God enter into that, make me enter into that, being a yogachara, entering into that to help this world to get the real purest form of the music, which becomes this singing becomes requirement once you become the good yogi. Once you'll become the perfect yogi, you'll progress. You will crave for something for that expressing bhav and ras, and this yogic sangeet Drupad will make your that trust to complete. वो आपकी प्यास वहां से पूरी होगी क्योंकि otherwise what happen, you get the best of the best thing. Have you seen Lord Shiva? Lord Shiva is having with all form of yoga, he's expert, he's a pinnacle of yoga. What does he do? What he's a pinnacle of, what does he do after getting everything? What does he do? He do only bhakti of Rama or Hari or Krishna or Vishnu, and his incarnation is Lord Hanuman. Hanuman, he has all the power of the yoga, all the siddhi, ashta siddhi नौ निधि के दाता. Right? What does he do? क्या करते हैं वो हमेशा गदा लेकर युद्ध नहीं करते हैं. वो तो राम काज करवे को आतुर. जब राम का काम करना है तभी, otherwise he do only that singing bhakti of Lord Rama. So that means once you'll become the good yogi, expressing that with your singing, expressing, as I told you the shlok, गानात पर तरम नाही, उससे परम ऊपर कुछ है ही नहीं. You want to express that. एक भक्ति की शुरुआती स्टेट भी होती है, जैसे योग की शुरुआती स्टेट होती है भक्ति. एवरीवन इज एक्सप्रेसिंग डूइंग भक्ति, भक्ति इज लेवल. बट हनुमान भक्ति, राधा भक्ति, दुर्गा भक्ति, that is inspiration for us. That is the goal of us. That's why the people of Braj called गोपी भाव. सुना होगा ना, गोपी भाव, राधा भाव सुना होगा. ये वही है. That is the best. लोग फॉलो करते हैं तो सभी कर रहे हैं. इवन प्रिपरेटरी पोज वाला भी कहता है मैं राधा भाव में, गोपी भाव में. बट वंस पर्सन विल गेट इट, देन इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द एक्सप्रेसिंग. तो आप जब पिनाकल अचीव कर लेते हैं तो आपको देन यू वांट टू एक्सप्रेस. तो विद दिस थॉट प्रोसेस, with these kind of conviction we are making today, we'll continuously doing it. And again, I'm giving best wishes to you for International Day of Yoga and World Music Day. Lord Shiva, Lord Krishna make the life of all of us all across the globe beautiful, happy, peaceful, calm, tranquility. It comes in our life. Yes, Omar. Same to you, sir. Have a nice day. See you on Monday. Okay, sir.